Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear Dipsians. Hope you are safe and sound. Today we are going to start our unit number 9, that is a poem, Equipment, written by Albert Guest. In this video we will discuss introduction of the poem and poet, its stanzas type and figure of speech used in the poem, and its rhyme scheme and theme of the poem. Okay students, figure of speech used in the poem are metaphor and imagery. Its rhyme scheme is AABBCC, and its stanza type are sestet, means each stanza consists of 6 lines. You can see this on the screen. Poem name is Equipment and its poet is Edgar Guest. Theme of the poem is self-belief, confidence, self-esteem, and qualities. Figure of speech used is metaphor and imagery also. In the whole poem, when we read the poem, there is an image in our mind and we can feel all the things. Let's discuss theme of the poem now. The theme of this poem, Equipment, is that people are the maker of their own destiny. Almighty Allah has blessed us many blessings. It is our duty how to utilize them for our glory and success and for the well-being of others. It is the effort and struggle that make us great and successful. इस पॉइंट का थीम ये है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को बेशुमार क्वालिटीज़ से नवाजा है. ठीक है. इक्विपमेंट वैसे तो बोलते हैं साजो सामान, लेकिन यहाँ पे पोएम में इंसान की क्वालिटीज़ मुराद हैं कि हर इंसान के अंदर बेशुमार क्वालिटीज़ पाई जाती हैं और हर इंसान पे मुनहसर है कि वो अपनी क्वालिटीज़ को किस तरह से यूज़ करता है और अपना टाइम नहीं ज़ाया करता, स्ट्रगल करता है, जैसे कि बहुत से कामयाब लोगों ने की और फिर वो ज़िंदगी में कामयाब होता है. तो इक्विपमेंट से मुराद यहाँ पे क्वालिटीज़ हैं. लेट्स डू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम नाउ. फिगर इट आउट फॉर योर सेल्फ माई लेट. गौर करो मेरे लड़के, फिगर इट आउट और अपने अंदर तलाश करो. यू हैव ऑल दैट द ग्रेटेस्ट ऑफ मैन हैव हैड. आपके अंदर वो सब है जो अजीम तरीन लोगों के पास होता है. 2 arms, 2 hands, 2 legs and 2 eyes. 2 बाजू, 2 हाथ, 2 टांगें और 2 आँखें. एंड अ ब्रेन टू यूज़ इफ़ यू वुड बी वाइज. और एक दिमाग है इस्तेमाल करने के लिए अगर तुम अक्लमंद हो. विद दिस इक्विपमेंट दे ऑल बिगैन. और इसी साजो सामान के साथ, इन्हीं सब चीज़ों के साथ उन्होंने भी शुरू किया. सो स्टार्ट फॉर द टॉप एंड से आई कैन. तो आप भी आगे बढ़ने के लिए स्टार्ट करो, ठीक है, शुरू करो. एंड से आई कैन, और ये बोलो कि मैं कर सकता हूँ. इन लाइंस के अंदर पोइट कह रहे हैं कि अपने अंदर हिडन जो क्वालिटीज़ हैं आप उसको तलाश करो. ठीक है. अपने बेटे से मुखातब होकर कह रहे हैं कि तुम अपनी हिडन क्वालिटीज़ को यूज़ करो और तुम्हारे पास अल्लाह ताला ने तुम्हें भी वो सारी ब्लेसिंग्स दी हैं कि जो ग्रेटेस्ट लोगों को दी हैं, जो ज़िंदगी में कामयाब हुए हैं, उन्होंने भी अपना दिमाग को यूज़ किया, अपने वक्त को यूटिलाइज़ किया और ज़िंदगी में उन्होंने सक्सेस को पा लिया. लुक देम ओवर द वाइज एंड ग्रेट, दे मेक देयर फूड फ्रॉम अ कॉमन प्लेट. अगर आप अक्लमंद और ग्रेट लोगों की लाइफ पे गौर करो, दे टेक देयर फूड फ्रॉम अ कॉमन प्लेट, तो वो भी एक कॉमन प्लेट से ही खाते थे. एंड सिमिलर नाइव्स एंड फोक्स दे यूज़. और यही चाकू और कांटे वो भी यूज़ करते थे. विद सिमिलर लेसेस दे टाई देयर शूज़. और इन्हीं तस्मों से वो अपने जूतों को बांधते थे. द वर्ल्ड कंसिडर दैम ब्रेव एंड स्मार्ट. और दुनिया उन्हें बहादुर और ज़हीन समझती थी. बट यू हैव ऑल दे हैड व्हेन दे मेड देयर स्टार्ट. लेकिन आपके पास भी वही कुछ है जब उन्होंने अपना स्टार्ट लिया था तो उनके पास था. अब इसमें वो दोबारा उसी थीम को लेके चल रहे हैं कि जितने भी ग्रेट और वाइज लोग गुजरे हैं उनके पास भी यही सारी ज़िंदगी के लवाज़मात थे. तो आपके पास भी वही कुछ है. जब उन्होंने स्टार्ट लिया था तो उनके पास भी कोई स्पेशल चीज़ नहीं थी. You can triumph and come to scale. You can be great if you will. आप भी फतह हासिल कर सकते हो, महारत पा सकते हो और अगर आप चाहो तो आप भी अजीम बन सकते हो. You are well equipped for what fight you choose.
اور آپ کو جو فائٹ لڑنی ہے اس کے لیے آپ کو ویل اکوپڈ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فلی بلیسڈ کیا گیا ہے. یو ہیو لیگس اینڈ آرمس اینڈ اے برین ٹو یوز اینڈ دا مین ہو ہیز ریزن گریٹ ڈیڈس ٹو ڈو began his life with no more than you. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی اگر زندگی کے اندر ایفرٹ کرو تو آپ فتح پا سکتے ہو, آپ ہر چیز میں مہارت حاصل کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, اور آپ بھی ان لوگوں کی طرح عظیم ہو سکتے ہو, اور آپ کو بھی وہ ساری چیزیں دی گئی ہیں, ساری بلیسنگ آپ کو بھی دی گئی ہیں تاکہ آپ ہر طرح سے جو ہے وہ مقابلہ کر سکو. اور جو لوگ رائز ہوئے یعنی جو گریٹ ہوئے, انہوں نے گریٹ کام کیے, ٹھیک ہے, began his life with no more than you, انہوں نے بھی اپنی زندگی اسی سے سٹارٹ کی تھی. You are the handicap you must face, اور جتنا بھی معذوری اگر تم دیکھتے ہو تو وہ تمہارے اندر ہے. You are the one who must choose your place, اور تمہیں اپنی جگہ خود چننی ہے. You must say where you want to go, اور تمہیں صرف یہ پتہ ہے کہ آپ کو کہاں تک جانا ہے. How much you will study the truth to know, اور سچائی جاننے کے لیے تمہیں کتنا جو ہے وہ اسٹڈی کرنی ہے. God has equipped you for life, اور خدا نے تمہیں ہر طرح سے نوازا ہے. Lets you decide what you want to be, اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو کیا بننا ہے. اور اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی معذوری ہے تو وہ تمہارے اپنے دماغ کے اندر ہے, ٹھیک ہے. آپ کو یہ خود چوز کرنا ہے کہ آپ نے کون سی جگہ چننی ہے, آپ نے کہاں تک جانا ہے, اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا ہے, اور یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ کو کیا بننا ہے. Courage must come from the soul within, the man must furnish the will to win. ہمت انسان کے اندر سے آتی ہے, صرف انسان کو اپنی قوت ارادی کو مضبوط کرنا ہوتا ہے جیتنے کے لیے. So figure it out for yourself, my lad, تو اپنے اندر تلاش کرو میرے لڑکے. You were born with all that the great men have, آپ کے اندر بھی پیدائشی طور پر وہ سب کچھ ہے جو عظیم لوگوں کے اندر تھا. With your equipment they all began, اور اسی equipment کے ساتھ انہوں نے بھی اسٹارٹ کیا. اور آپ بھی اپنے آپ پہ قابو رکھو اور یہ کہو کہ آپ کر سکتے ہو, یعنی آپ کو خود پہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہو. تو آپ کے اندر سے جو ہے وہ ہمت آئے گی. صرف آپ کو جو ہے وہ اپنی قوت ارادی کو مضبوط کرنا ہے اور اس کو فرنش کرنا ہے. فرنش مین پالش کرنا ہے. اس لیے آپ اپنے اندر جو ہے اپنی ہڈن کوالٹیز کو دریافت کرو, اور آپ کے اندر وہ سب کچھ ہے جو عظیم لوگوں کے اندر تھا اور آپ کر سکتے ہو.